Assalamualaikum everyone. I am Salman Tariq, and today we are going to discuss about the short circuit calculation and different types of the fault. So this topic will be covered from the VK Mehta book, that is the chapter number 17 from the VK Mehta book. तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन में जाने से पहले कुछ डिस्कस करते रहे कि शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। तो शायद पावर सिस्टम एनालिसिस में आपने इसका कुछ बेसिक्स पढ़े हों, कुछ पॉजिटिव जीरो ने और नेगेटिव सीक्वेंस से कुछ आपने कैलकुलेशंस की हों। मे बी दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक फॉर यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब भी आपने कोई प्रोटेक्शन स्कीम अपनी डिज़ाइन करनी होती है तो तब तक आप डिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता ना हो कि एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा। तो अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो सकता है और क्या होगा, these are the calculations, and depending upon these calculations you know that you design your power protection equipment कि उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी इम्पीडेंस कितनी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। एज एन इंजीनियर जो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिज़ाइन होते हैं किसी खास वोल्टेज के लिए और ख़ास करंट के लिए, और जब करंट या वोल्टेज उस लेवल से एक्सीड करती है तो दे आर सॉरी चांसेस कि आपका जो सिस्टम है वो बर्न आउट हो सकता है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बर्न आउट हो सकते हैं। इसीलिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और कुछ प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिलेस एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप मशीन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा इल्म में होगा कि जब भी हम कोई भी करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट फ्लो करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज इनरश करंट। इनरश करंट कहते हैं जो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई मोटर स्टार्ट करते हैं तो पैरेलल में डिफरेंट आपकी रेक्टेंसेस अटैच होती हैं, एंड दे आर इन पैरेलल, and you know that when the reactances or when the impedances are in parallel, तो as a whole equivalent circuit अगर equivalent reactance या equivalent impedance हम कैलकुलेट करें तो you can say ओवरऑल आपकी जो reactance है वो डिक्रीज हो जाए। जब ओवरऑल reactance आपकी डिक्रीज होती है तो आपकी जो करंट है वो शूट करती है, क्योंकि इम्पीडेंस से बहुत कम मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल एक कोई एयर गैप रिएक्टेंस है, कुछ स्टेटर की वजह से है, कुछ इंडक्टर की वजह से है, कुछ लीकेज गैप रिएक्टेंस एंड सो ऑन। ये आप मशीन मॉडलिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर मशीन फंडामेंटल्स आप पढ़ रहे हैं। तो उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना कि क्या होता है सिंक्रोनस मशीन, क्या होती है, कैसे डिफरेंट रिएक्टेंसेज इन्वॉल्व होता है। तो इन शॉर्ट आपकी जो रिएक्टेंस है वो स्टार्टिंग में कम होती है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। फिर जो जो वक्त गुजरता है तो होता क्या है कि पैरेलल में रिएक्टेंस कम हो जाती है। आपको पता है कि पैरेलल में जब कोई रिएक्टेंस कम हो जाए तो इट मींस कि आपकी जो ओवरऑल रिएक्टेंस है वो इंक्रीज हो। तो हम कहते हैं कि आपकी जो रिएक्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है, तो जो वो फ्लो बहुत ज़्यादा एब्रप्टली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही थी करंट, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और फिर वक्त गुजरता है और एक और रिएक्टेंस कम हो जाती है, और जो अच्छा जब दो रिएक्टेंसेस सब ट्रांजिएंट, उसको हम नाम दे देते हैं ट्रांजिएंट का। इसी तरह जब मजीद वक्त गुजरता है और आपकी जो रिएक्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। और इस स्टेज में हम कह देते हैं कि आपकी जो करंट फ्लो कर रही है सिंक्रोनस रिएक्टेंस में, इट इज नाउ स्टेडी स्टेट। आपकी जो बिल्कुल जो आपकी जो इनरश करंट थी वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही थी, वो अब स्टेडी स्टेट लिमिट उसने अचीव कर ली है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंसेस, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड देन सिंक्रोनस। तो कहानी सुनाने का मकसद क्या है कि इनरश करंट है, स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट है, इट मींस दैट यू हैव टू डिज़ाइन योर प्रोटेक्शन इन सच अ वे कि वो स्टार्टिंग में आपकी जो मोटर उसको बर्न आउट ना कर सके। अच्छा, शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन को इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है, इसकी रीज़न
ये है कि दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉल्ट, लेकिन जो भी डिफरेंट टाइप्स आपके फॉल्ट हैं वो एट द एंड शॉर्ट सर्किट में कंप्लीट हो जाते हैं, सॉरी कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ओपन सर्किट, आपकी कोई कंडक्टर जा रहा है और वो ब्रेक कर जाता है, दिस इज द ओपन सर्किट, लेकिन आफ्टर सम टाइम और आफ्टर द ब्रेकिंग इट कैन टच टू द अदर कंडक्टर और एज द आउटकम वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एज एन इंजीनियर आप शॉर्ट सर्किट जो करंट है जो डिफरेंट इक्विपमेंट में पास कर सकता है या डैमेज कर सकता है आपके इक्विपमेंट को, या आपकी जो कंज्यूमर्स की सर्विस को इंटरप्ट कर सकता है, तो आपने वो कैलकुलेट करना है और उसकी मदद से शॉर्ट सर्किट एमवीए हम कहते हैं, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, फिर प्रोटेक्शन स्कीम को डिजाइन करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन और ऑपरेटर्स और शॉर्ट सर्किट में जाने से पहले अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट के, तो फॉल्ट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। देयर कैन बी सम सिमेट्रिकल फॉल्ट, या जिसे हम बैलेंस फॉल्ट भी कह देते हैं, और देयर कैन बी सम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एज वेल। सिमेट्रिकल फॉल्ट की जैसा कि हमने कह रहे हैं कि बैलेंस फॉल्ट भी हम कह सकते हैं, तो इट मींस कि ये आपके थ्री फेज के जितने भी फॉल्ट्स हैं, दीज आर द सिमेट्रिक फॉल्ट्स, and you can define it is the fault on the power system which gives rise to a symmetrical fault current, that is equal fault current in all the lines with some 120-degree displacement is known as symmetrical fault। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम थ्री फेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर 120 डिग्री फेज शिफ्ट विद ईच अदर। सिमेट्रिकल फॉल्ट जब भी अकर होता है तो तीनों कंडक्टर्स में हमने कहा कि इकट्ठा आएगा। फॉर एग्जांपल इट इज आल्सो नोन एज द थ्री फेज फॉल्ट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच शुड बी नोटेड कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो बहुत कम हो आता है, क्योंकि प्रोटेक्शन स्कीम हमने इसकी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की होती है। क्योंकि जब भी आप कह सकते हैं कि कोई भी सिमेट्रिकल फॉल्ट आएगा तो आपका ब्लैक होल होने का खतरा है। फॉर एग्जांपल जनरेशन साइड है, थ्री पे जनरेशन कर रहा है आपका जनरेटर, अगर उधर फॉल्ट आ जाता है इट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट, या आपकी तीनों लाइंस अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट। और सो सिमेट्रिकल फॉल्ट सबसे ज़्यादा सीवियर है एंड इम्पोजेज द मोर हैवी ड्यूटी ऑन द सर्किट ब्रेकर। इसी तरह देयर आर सम अदर यू कैन से faults, they and these faults are known as the asymmetrical faults, या जितने भी आपके अनबैलेंस फॉल्ट है उनको हम asymmetrical fault भी कहते हैं। There are the different common types of asymmetrical faults. For example, आपकी कोई वायर ब्रेक होकर ग्राउंड के साथ टच हो जाती है, इट कैन बी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दो लाइन आपकी आपस में टच शॉर्ट हो जाती है, इट इज लाइन टू लाइन ग्राउंड। और दो आपकी आपस में टच होकर लाइन ग्राउंड हो जाती है, तो इट इज डबल लाइन टू ग्राउंड। And the analysis of this type of fault is often simplified by using the methods such as the symmetrical component। यानी जितने भी आपके asymmetrical फॉल्ट्स हैं या अनबैलेंस फॉल्ट है उनको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सिमेट्रिकल है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दैट फॉल्ट सिनेरियो इन द रियल टाइम। The operation of a power system departs from the normal after the occurrence of a fault. The most common faults in an electrical installation are short circuits, that is, the breakdown of insulation between the conductive parts which normally are at the different potential। तो जब भी आपका फॉल्ट आएगा तो abnormal कंडीशन आएगी, एक्सेसिव करंट और वोल्टेज किसी भी नोड या किसी भी पॉइंट पे आ सकते हैं। तो आपने वो जो मैग्नीट्यूड है फॉल्ट करंट की उसको आपने कंट्रोल करना है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द जनरेटेड पावर इन द सिस्टम कि किस जगह पे फॉल्ट आया है, डिस्टेंस कितना है सोर्स का, जिस जिधर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉल्ट, फॉल्ट रेजिस्टेंस कितनी है, और अगर आपने ग्राउंडिंग की है तो इसका क्या। तो जब भी आपका कोई फॉल्ट आएगा थ्री फेज नेटवर्क में, इट मींस कि वोल्टेज और करंट डिस्टर्ब होंगे एंड देयर विल बी सम इंक्लूडिंग अ कंप्लीट वोल्टेज कोलैप्स नियर द फॉल्ट लोकेशन।
जो potential difference in the ground voltage ground and across the earthing resistance create dangerous step and the touch voltages near the fault. And you can say कि जो डायनामिक फोर्सेस द फॉल्ट करंट के हैं ये इलेक्ट्रिक और एट द फॉल्ट लोकेशन और जो थर्मल इफेक्ट ऑफ द करंट है नेटवर्क में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं एंड इट कैन डैमेज द प्लांट इक्विपमेंट एंड ह्यूमन एज वेल. So the voltage and current disturbances interrupt the transmission of the power and thus also affect the customers. For example, कोई भी एक फीडर है आपके पास, लेट्स सपोज कि आपके वेट मिनट, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फीडर है and somewhat like this. For example, this is the generator side and there are some transformer and this is the feeder after the transformer. और इधर कोई आपके पास फॉल्ट आ जाए, what will happen if there is some fault in this scenario? तो फॉल्ट अकर्स फीडर में एट अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल किसी एफ पॉइंट पे, तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है जनरेटिंग स्टेशन से वो उसकी बहुत लिमिटेड इम्पीडेंस होगी और ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस होगी, और आप कह सकते हैं द इम्पीडेंस बिटवीन द लाइन जनरेटर एंड द बिटवीन द जनरेटर एंड द पॉइंट ऑफ फॉल्ट. तो इट मीन्स कि नॉलेज ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट इज वेरी नेसेसरी. जैसा कि आपको याद हो तो पर यूनिट का भी हमने जब जिक्र किया था, तो कोई भी हमें वहाँ फॉल्ट आता है तो हम सबसे पहले पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो पर यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम सबको इम्पीडेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. जब सबको इम्पीडेंसेस में कन्वर्ट कर लेते थे तो इट वाज इजियर फॉर अस कि डिटरमाइन करना कि आपके पास जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो कितनी है. काफ़ी सिचुएशंस में जो इम्पीडेंस होती है लिमिटिंग द फॉल्ट करंट वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है. फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर की बात करें, रिएक्टर्स की बात करें, जनरेटर्स की बात. इसी तरह अगर केबल्स की बात करें या लाइंस की बात करें तो उस दे आर मोस्टली रेजिस्टिव इन नेचर, बट वेयर द टोटल रिएक्टेंस इन कैलकुलेशंस एक्सीड्स 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस, इसीलिए 3 टाइम्स अब रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट होता है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस को नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से जो एरर आता है वो हमारे पास 5% से ज़्यादा नहीं आता. नाउ इसी तरह इफेक्ट ऑफ फॉल्ट की हम बात करने से पहले, अच्छा, एक परसेंटेज रिएक्टेंस का हमने बार बार जिक्र किया था. फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो जब हमने जिक्र किया था उसका पर यूनिट रिएक्टेंस का, तो तब भी हमने कुछ परसेंटेज रिएक्टेंस का जिक्र किया था. तो परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होती है? इट इज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, रिएक्टर्स. और परसेंटेज रिएक्टेंस को हम इसलिए परसेंटेज रिएक्टेंस कहते हैं कि जो रिएक्टेंस है इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप्ड इन द सर्किट व्हेन फुल लोड करंट इज फ्लो. यानी कोई भी आपका इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है या रिएक्टेंस है, तो उसके अपने परसेंटेज रिएक्टेंस अगर गिवन नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो आपके टोटल फेज वोल्टेज जो ड्रॉप होगा सर्किट में जब भी कोई फुल लोड करंट फ्लो करेगी, तो उस रिएक्टेंस जो परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप हो रही है उसको हम परसेंटेज रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं, एंड इट विल बी इक्वल टू आई एक्स डिवाइडेड बाय वी. दिस कैन बी रेड आउट फ्रॉम योर वी के मेहता बुक एज वेल. So a large amount of power is dissipated at the fault point, which means loss of revenue for the utility. Failure to remove a fault will usually result in a rapid expansion of damage to a system. So various protection equipment are used in guarding against such fault calculations, and an idea of magnitudes of such fault currents gives the engineer the current settings of the various protection devices and the ratings of the circuit breakers in the network. कि एक दफा आपने फॉल्ट कैलकुलेटर कर लिया तो करंट सेटिंग आप कर सकते हैं
डिफरेंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस की भी, और जो सर्किट ब्रेकर कितनी रेटिंग का होना चाहिए वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। So in the light of the above discussed effects of the fault or the short circuit analysis is highly needed. So performing the short circuit calculations requires an understanding of various system components and their interactions. जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप किसी भी कंपोनेंट्स की बात करें पावर सिस्टम में, तो मेन कंपोनेंट्स आर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइंस, देन देयर प्रोटेक्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, स्विच गियर और लोड एट द एंड आपके पास। There are the different types of the short circuits या unsymmetrical faults. इसमें अगर हम बात करें थ्री फेज फॉल्ट with or without earth, there can be three phase fault and there can be three phase to ground fault as well. जैसा कि इस स्नैप में भी आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा है कि दिस इज द थ्री फेज फॉल्ट, कि तीनों फेज में आ गया और इट कैन बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो थ्री फेज टू ग्राउंड। इसके जो परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं आने के, दीज आर दी 5% ओनली। Similarly, there can be some face-to-face or face-to-face to ground fault as well. तो इसके जो परसेंटेज चांसेस हैं 10 to 15% चांसेस हैं अक्रंस के। इसी तरह फेस टू फेस सॉरी और शॉर्ट सर्किट भी जिसे आप कहते हैं, और टू फेज शॉर्ट होके ग्राउंड के साथ टच हो गया, टू फेज टू अर्थ, इसके जो चांसेस हैं दीज आर दी 10 to 20%। देन कोई भी आपका फेस अर्थ को कनेक्ट हो जाता है तो इसको फेस टू अर्थ फॉल्ट कहते हैं, और इसके चांसेस 65 से 70% होते हैं। जो आपके 85% फॉल्ट हैं ओवरहेड लाइन में आते हैं, और जो 50% उनमें से आपके लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से आते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक आई होप हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर फिर भी क्योंकि आपके स्कोप में नहीं है तो उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में लाइटनिंग स्ट्राइक का क्या इफेक्ट होता है। A three-phase fault affects the three-phase network equally. Symmetrical fault, they rarely occur, and all the three conductors are involved and carry the same RMS short circuit current. So there is the need to use one conductor for the calculation. यानी किसी एक भी कंडक्टर में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इट मीन्स दैट यू अज्यूम कि बाकी दोनों कंडक्टर्स में भी सेम आरएमएस जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो फ्लो कर रही है। And it is valid because system is maintained in a balanced state during the fault, and voltages are equal and 120-degree apart, currents are equal and 120-degree apart, and the power system plant symmetrical, phase impedance equal, mutual impedance equal और shunt impedance भी equal है। जो आपके पास थ्री फेज फॉल्ट है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि थ्री फेज नेटवर्क को सिमेट्रिकली सबको अफेक्ट करेगा, तो इसलिए हम सिर्फ वन फेज की कैलकुलेशन करते हैं। और जैसा कि अगर आपको याद हो तो हम पहले पर यूनिट सिस्टम या एमबीए मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड दी उसकी कुछ आपको असाइनमेंट्स भी दी थी। आपने आई थिंक आज आपने वो सबमिट भी करवाई हैं, ईमेल मुझे आ रही थी, आई थिंक वही असाइनमेंट है। And this method is used for the analysis of the three-phase fault. For example, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई जनरेटर आपके पास, कोई ट्रांसफार्मर है, कोई थ्री फेज फॉल्ट आ जाता है, तो आप फिर क्या करते हैं, आप इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं लाइक दिस। और इसमें आप देखें देयर आर द थ्री फेजेस ए बी एंड सी। तो किसी एक फेज के लिए भी अगर आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं, इट मींस यू कैन अज्यूम फॉर द other phases as well. अगर हम डिफरेंट स्टेप्स देखें, जब भी आपने कोई भी सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस करनी है, तो सबसे पहले आपको लाइन सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप इंडिकेट करेंगे रेटिंग क्या है, वोल्टेज क्या है और परसेंटेज रिएक्टेंस क्या है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क। देन यू विल चूज अ न्यूमेरिकली कन्वीनियंट वैल्यू, जैसा कि हम पर यूनिट में करते थे, कोई बेस केवीए हम अज्यूम कर लेते हैं, एमवीए बेस एमवीए अज्यूम कर लेते हैं, और जितने भी आपकी परसेंटेज रिएक्टेंसेस होती हैं उनको उस बेस वैल्यू के मुताबिक कन्वर्ट कर लेते हैं।
फिर हम क्या करते थे, रिएक्टेंस डायग्राम शो करते थे और उसमें पर यूनिट के लिहाज से सब वैल्यूज हम पुट कर देते थे और फिर हम देखते थे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास फॉल्ट आया तो किस जगह पे आया है और उसके लिए हम फिर क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेते थे। जब शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लेते थे तो इट मीन्स कि आप कोई शॉर्ट सर्किट केवीए भी फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि परसेंटेज रिएक्टेंस है किसी भी जनरेटर की, तो आप बताएं कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा अगर थ्री फेज आपके पास कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशन बताई जा सकती है कि ये स्पेसिफिकेशन। So these are the three phases, IEA, EB, and EC, and these are the three currents flowing. And this is the IEA1, which is the fault current, which is the flowing here, and this is the impedance. So this was the per unit system. अगर आप जो आपने असाइनमेंट भी बना के दी है कि हम डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स को ख़त्म कर देते थे और एक बेस आप सपोज कर लेते थे और इसी तरह बेस के भी आप सपोज करते थे डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसफार्मर्स में और उसके मुताबिक आप अपनी सब वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर देते थे पर यूनिट वैल्यू और फिर इम्पीडेंस के मुताबिक प्राइमरी और सेकेंडरी के मुताबिक टर्न रेशियो की मदद से आप फाइंड आउट करते थे पर यूनिट वैल्यूज और फिर आप इम्पीडेंस फाइंड आउट निकालते थे, बेस करंट निकालते थे। ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरह ट्रांसफार्मर की पर यूनिट इम्पीडेंस हम फाइंड आउट करते थे और एट द एंड आपके पास कुछ डायग्राम आ जाती थी। इट वाज समewhat like this. For example, you have to calculate the fault current in 11 kV, 132 kV and 33 kV system for the three-phase fault as shown in the figure. तो थ्री फेज फॉल्ट आ गया आपके पास इधर। तो सबसे पहले आप क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल आप देख लेते थे कि बेस वैल्यूज क्या है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, बेस एमवीए कितनी है, फिर आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करते थे। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करंट फाइंड आउट करनी है, फिर उसकी मदद से आप जी पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट कि इम्पीडेंस एक दफ़ा आपके पास टोटल आ गई तो फिर आप कैलकुलेट करते थे कि आपके पास फॉल्ट करंट जो है वो कितनी फ्लो कर रही है। फॉर एग्जांपल इधर जो वोल्टेज है वो हम क्या सपोज करते थे कि 1 पर यूनिट है एंड दिस इज द टोटल इम्पीडेंस दैट यू हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 1.432। तो यू कैन कैलकुलेट कि 11 केवी में कितनी करंट फ्लो कर रही है, फिर 132 केवी में कितनी कर रही है और 33 केवी में। तो जैसा कि आप फार्मूला से देख सकते हैं, दी दिस इज the MBA method is recognized and widely accepted by the industry in calculating the power system short circuits, where the reactances of all the circuit components for exceeds resistance, producing a consistently high X by R ratio throughout the system. आप सीरीज MVA निकाल लेते हैं इस मेथड में तो पैरेलल MVA निकाल लेते हैं and you can see from the formulas तो series आपके पास जो MVAs हैं they are being calculated same as resistances in parallel, जो parallel MVA है of combination are done same as resistances in series. So the MVA diagram undergoes some reduction process as impedance diagram and the that MVA values are used instead of per unit impedances or the factors like this. So the MVA method आपके पास it is a modification of the ohmic method जिसमें impedance of कोई भी circuit is equal to the impedance of components जितने भी available है circuit. So in practice, MVA method is used by separating the circuit into its components. सबसे पहले आप components को divide कर रहे हैं, differentiate कर रहे हैं, separate कर रहे हैं. Then you have to calculate each component with its own infinite bus as shown in the figure.
below 1 and 2। आप देख रहे हैं कि कैसे आपने जनरेटर्स को, ट्रांसफार्मर्स को और सबको सेपरेट किया है। फिर आपने क्या किया है, आपने MVA डायग्राम बनाई है कि डिफरेंट MVA उनकी कितनी है। फिर एट द एंड यू हैव टू कैलकुलेट द fault rate. For example, in our example, the MVAs 1 and 2 are in series, that is 700 और 500। तो इसको आप एज अ पैरेलल ट्रीट करेंगे जैसा कि हमने पहले कहा है। और देन 1 and 2 and 3 आर इन सीरीज, फिर हम जो इसमें से IMV है आपके पास उसको 3 के साथ पैरेलल में ट्रीट किया, एंड सिमिलरली 4 के साथ और फिर 5 के साथ। Then considering for example MVA at the fault point आप फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, और considering the voltage factor of 1.1 MVA will be equal to 114.18। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें MVA मेथड का पर यूनिट से, तो जो पर यूनिट सिस्टम है इज मोर एक्यूरेट एज फॉर द थ्री फेज फॉल्ट। Then there can be some DC transients and the offsets as well। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी फॉल्ट को अगर हम मजीद अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो देयर इज सम DC कंपोनेंट एंड देयर कैन बी सम AC कंपोनेंट एज वेल। ये आप इसकी डेरिवेशंस आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। This is the fault current and this is the DC component associated with the fault current. So this is the end of the part 1. That's for asymmetrical faults। इसी तरह asymmetrical faults की हम बात करें तो there can be some line to line, line to ground and double line to ground as well। But before going to this level, there should be some numerical problems related to the symmetrical fault analysis। So let's see some numerical problems which are related to the symmetrical fault analysis। For example, this is the problem, and here you can see that he is referring to the figure 17.8। So this is the 17.8 here। And here there is some you can say the fault। और उसकी जब reactance diagram हम find out करें, it will be somewhat like this। And here you can say there is some at common node there is some fault। So shows a single line diagram of a three-phase system, and the percentage reactance of each alternator is based on its own capacity। You have to find out the short circuit current that will flow into the complete three-phase short circuit। Now you know that first of all the base kVA you have to assume, for example it is 35,000 kVA, and then you can say that 35,000 divided by 15,000 kVA, that is base our actual into 30, it will be equal to 70%, because here the 30% is shown, and this is the percentage reactance। एक दफा मैं दोबारा आपको दिखा दूं। These are the different types of the formulas। This is the formula we are using here to find out the percentage reactance at the base kVA। So we have calculated the reactances of the alternator A and then B, and the line corresponding to the 35,000 kV at 12 kV is we can find out with the help of this formula, that is your I will be equal to base kVA into 100 over percentage reactance। Then and the both reactances are in parallel, so percentage reactance will be XA parallel to XB, and then you can find out and the I short circuit current with the help of this formula as we have calculated the percentage reactance। This is the alternative method, and you can use
this method to find out the short circuit current as well. Similarly, then he said कि आपके पास कोई 3 फेज 20 MVA 10 kV alternator है, उसकी जो internal reactance है वो कोई for example 5% है and negligible resistance is there, then you have to find out what is the external reactance per phase to be connected in series with the alternator कि आपकी जो steady current और या short circuit है वो 8 times full load current से exceed ना करे। तो सबसे पहले आपको पता है कि 20 MVA आपके पास है और आपके पास जो कितने केवी का है 10 kV का अल्टरनेटर है। सो फ्रॉम S इज इक्वल टू √3 IV यू हैव कैलकुलेटेड कि फुल लोड करंट आपकी कितनी है। फुल लोड करंट आ गई तो 3 फेज सिस्टम है तो पर फेज के लिए आपने क्या किया √3 से डिवाइड कर दिया और आपके पास वोल्टेजेस पर फेज की आ गई। और क्योंकि जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है इट शुड नॉट एक्सीड 8 टाइम्स द फुल लोड करंट। फुल लोड करंट कितनी है 1154.7। so it means that the total percentage required should be full load over short circuit current multiplied by 100। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका फुल लोड करंट 1 है तो शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम 8 होनी चाहिए। तो 1/8 multiplied by 100 is equal to 12.5. It means that the total percentage reactance should be 12.5. It should not be greater than 12.5. Now the question is कि external आपकी percentage reactance कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरनल रिएक्टेंस उसकी कितनी है 5% उसकी अल्टरनेटर की अपनी है। इट मींस तो आपको जो एक्सटर्नल रिएक्टेंस है रिक्वायर्ड इज 12.5 minus 5 is equal to 7.5%. Now let X ohm be the per phase external reactance required. So you know that from the formula percentage reactance can be calculated like this, that is Ix over V into 100. So here will be 7.5 is equal to 1154.7 divided by voltage. We will get X is equal to 0.375 ohm. तो आपको इंटरनल जो एक्सटर्नल रिएक्टेंस है 0.375 ओहम की लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 फेज कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इट इज ऑपरेटिंग एट 10 किलोवोल्ट एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम and reactance of 4 ohm is connected to the generating station bus bars through 5 MVA step up transformer। यानी इधर आपने कोई रिएक्टेंस लगा दिया, कितनी लगा दी रिएक्टेंस ऑफ 5%, sorry, having a resistance of 1 ohm and reactance of 4 ohm. This is here. This is the resistance and the reactance of the transmission line. The bus bars are supplied by a 10 MVA generator having 10% reactance. Then you have to calculate that what should be the short circuit KVA fed to the symmetrical fault between the phases if it occurs at the load end of the transmission line and if it occurs at the high voltage terminal of the transformer। कि अगर ट्रांसफार्मर के पास आपके पास कोई फॉल्ट आ जाता है बताएं कि शॉर्ट सर्किट केवीए कितना होगा फेड टू द सिमेट्रिकल फॉल्ट, और अगर आपका फॉल्ट लोड की तरफ आ जाता है तो फिर क्या होगा। तो इट मींस यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जांपल कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट आपकी जो रिएक्टेंस है उसकी ओहम और जो रिएक्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं उसकी परसेंटेज भी चेंज हो जाती है। तो यू हैव द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज रिएक्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो परसेंटेज रिएक्टेंस है आपने अल्टरनेटर की फाइंड आउट की, फिर आपने ट्रांसफार्मर की फाइंड आउट की। तो दिस इज द 10% and 10% and as the alternator and the you can see that alternator and the transformer are in series with each other. So then you have the line impedance is given in ohms, so it should be converted into percentage impedance as well, and you have the formula of this with the help of which you can calculate it and calculate into the resistance. So here you get the 40% and here you get 10%.
So the 10% alternator and 10% transformer reactance, then there is some fault, and then there is some resistance and the reactance of the transmission line, that is 10% and the 40% after the fault, and the fault can be happening here and it can be happening here. So the total resistance, you can say that is equal to 10% and total reactance now is equal to 60%. तो इम्पीडेंस अगर हम फाइंड आउट करें 60 का फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, d will be equal to x square plus r square and under root it will be equal to 60.83%. तो अगर आपने शॉर्ट सर्किट केवीए निकालना है तो you have to divide with the S is equal to under root 3 vi, S is equal to vi. So you know that this is your voltage and this is your reactance and this will be the short circuit kVA. और इसी तरह अगर आपका वोल्टेज या जो फॉल्ट है हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर F1 की तरफ है, इट मींस कि ये एक्सक्लूड कर देंगे and only reactance will be 20%, and so the short circuit kVA you can see that it is much increased. That's why we say that कि जब भी आपने प्रोटेक्शन डिजाइन करनी है तो देयर इज सम जोन ऑफ द प्रोटेक्शन. जोन ऑफ प्रोटेक्शन डिफाइंस कि आप जो प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन कर रहे हैं वो कौन से एरिया तक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द जोन ऑफ द प्रोटेक्शन. So they are the different zones of the protection schemes. ये आप इंशाल्लाह पावर सिस्टम प्रोटेक्शन अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा तो उधर आप ये चीजें डिस्कस करें. Then the plant capacity of a three-phase generating station consists of two 10,000 kVA generators of the reactance 12% each and one the 5,000 kVA generator of the reactance 18%. The generators are connected to the station bus bars from which load is taken through three 5,000 kVA step-up transformers, each having a reactance of 5%, and you have to determine the maximum fault MVA which the circuit breakers, low voltage side and high voltage side may have to deal with. So same is the procedure, you can calculate it by yourself. इसमें एक से ज़्यादा है तो ये पैरेलल में आ जाएंगे, बट डिफरेंस इतना है. तो पार्ट एंड आप ऐड दिया निकाल.